Hello guys, welcome to my channel. Hope you guys are doing good. So guys, without wasting our time, let's start the session. Okay, the topic which we are going to discuss today is Indus Valley Civilization. So let's start. Charles Mason was first person to visit Harappa in 1826 and gave the earliest reference of the civilization. In 1912, J. Fleet discovered Harappan seal which led to the excavation under Sir John Marshall. In the year 1924, Sir John Marshall named the civilization as Indus Valley Civilization. Sutka Gandar on the Makran coast represent western boundary. Alamgirpur, Uttar Pradesh represents eastern boundary. Manda, Jammu and Kashmir represents northern boundary. Daimadabad in Maharashtra represents southern boundary. Harappan people used different types of pottery such as glazed, polychrome, encysted, perforated and knobbed. Indus Valley civilization belongs to Chalcolithic age and Indus Valley civilization was an urban civilization. According to anthropological survey, authors of Indus population were of four types: Proto-Australoid, Mediterranean, Alpine and Mongoloid. The civilization of Mesopotamia, Egypt, Chinese resembles a great deal with Indus Valley civilization. A seal consists of three-faced deity seated in yogic posture with two-horned head surrounded by seven animals: rhino, elephant, bison, humped bull, tiger, buffalo, and deer. Mesopotamia's named Indus Valley civilization as Meluha, flood, drought, deforestation, orthodox mentality, etc., with various regions to the end of Indus Valley civilization. Okay, the time period of Indus Valley civilization is early Harappan 3200 to 2600 BC, matured Harappan 2600 to 1900 BC, and late Harappan 1900 to 1300 BC. But if we have to say exactly, then the exact time period of Indus Valley civilization is 2500 to 1750 BC, and that is according to radiocarbon dating. So यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला दैट चार्ल्स मेसन पहले पर्सन थे जो हड़प्पा विजिट किए थे इन 1826 पे. उसके बाद जे फ्लीट ने डिस्कवर किया था हड़प्पन सील 1912 पे. उसके बाद सर्जन मार्शल ने इन 1924 वहाँ पे ही फाउंडेड अ सिविलाइजेशन एंड उस सिविलाइजेशन को ही नेम्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. वहाँ पे दिया गया है सम ऑफ द बाउंड्रीज. ओके, सो सुद का कंडर जो कि मार्करन कोस्ट में सिचुएटेड है रिप्रेजेंट वेस्टर्न बाउंड्री. आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो है वो रिप्रेजेंट ईस्टर्न बाउंड्री. मंद इन जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंट नॉर्दर्न बाउंड्री. दाइमादाबाद इन महाराष्ट्र रिप्रेजेंट साउदर्न बाउंड्री. दैट मीन्स प्रेजेंटली all the three boundaries except western boundary are situated in India. तो वेस्टर्न बाउंड्री ही सिर्फ जो कि अभी ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है. हड़प्पन पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटरी जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. एंड ये एक चालकोलिथिक एज से बिलोंग्स करते हैं एंड इट्स एन अर्बन सिविलाइजेशन है ना. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे देयर फोर टाइप्स ऑफ देम, फोर टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन: प्रोटो-ऑस्ट्रेलोइड, मेडिटेरेनियन, अल्पाइन एंड मंगोलॉइड. दैट मीन्स एक ही टाइप की पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं था, इट वाज मिक्स्ड है ना. तो उसके बाद सिविलाइजेशन में व्हाट वी गॉट इज दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड अ ग्रेट डील विद मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना. दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उस टाइम में दे यूज टू डू ट्रेड विद आउटसाइड वर्ल्ड. So I don't know how, maybe by land or maybe by ship, which we are going to discuss later. A seal consists of three-faced deity seated in yogic posture with two horned heads surrounded by seven animals. So वहाँ पे एक seal मिला था हड़प्पन seal. तो उसका क्या क्या वो स्पेस कॉन्सिस्ट क्या क्या चीज़ थे वहाँ पे, क्या what was its structure. उस seal का structure कैसा था? It was consisted of three-faced deity seated in yogic posture with two horned head and surrounded by seven animals. And the name of the animals are given. It is very much important from exam point of view. We all have to memorize these names. That is rhino, elephant, bison, humped bull, tiger, buffalo and deer. Okay. एंड मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा नाम से जाना जाते थे. एंड वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट रीजन why and how this civilization collapsed or disappeared, but according to archaeologists and historians, जैसे कि फ्लड, ड्राउट, डिफोरेस्टेशन या ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी जो थे वो रीज़न हो सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड होने का, बट एग्जैक्ट रीज़न वी डू नॉट नो.
इसको टाइम पीरियड्स दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अर्ली हड़प्पा 3200 टू 2600, मैच्योर हड़प्पा 2600 टू 1900 BC एंड लेट हड़प्पा 1900 टू 1300 BC। अगर एग्जैक्टली बोले तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज 2500 to 1750 BC, and that is according to radiocarbon dating. So radiocarbon dating एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस दे यूज इट टू नो द टाइम ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग्स, कि वो कौन सा टाइम पे बिलोंग इंस्ट्रूमेंट है, और उसी इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है कार्बन रेडियोकार्बन डेटिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने पहले किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये बहुत बड़ा था, इजंट इट। तो इसके अंदर में छोटा छोटा प्लेसेस डेफिनेटली होता होगा। तो वो प्लेसेस का नाम सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस दिया गया है। वो प्लेसेस कौन सा रिवर के पास फ्लोराइज्ड किया गया था, सिचुएटेड थे, वो दिया हुआ है। एंड प्रेजेंटली ये कहाँ पे लोकेटेड है वो दिया हुआ है। एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स, वहाँ के सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया है। दिस ऑल आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों को ये सब जो दिया गया है, प्लेसेस, रिवर्स, जितने कुछ दिया हुआ है, वो सब डिटेल्स में आप लोगों को दिखना होगा। मैं रीडिंग कर देता हूँ, आप लोग एक बार जस्ट हियर इट आउट। प्लेस इज हड़प्पा, रिवर रवि, location is Montgomery, Sahiwal district, Western Punjab, Pakistan. That means Harappan civilization was situated beside Ravi river, and present it is located in Montgomery, Sahiwal district, Western Punjab, Pakistan, Western Punjab, Pakistan में ये situated है। So important points क्या है? In 1921 हड़प्पन प्लेस और सिविलाइजेशन को डिस्कवर्ड किया गया था दयाराम सानी ने, एंड इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यू हैव टू अंडरलाइन दैट particular sentence, it's very much important from exam point of view. Like the question will be, which was the first discovered site of Indus Valley civilization? Answer is Harappa. उसके बाद number 2 point is great granary, 2 rows of 6 granaries, and number 3 is single room barrack. Number 4, a male statue in a dancing pose. You just have to go through that. Number 2, Mohenjo-daro. It is situated beside Indus River, and presently it is located in Larkana district, Sindh, Pakistan. And the important point is Mohenjo-daro was discovered by Rakhaldas Banerjee in 1922, and it was the second discovered site of Indus Valley civilization. And the local name of Mohenjo-daro is the Mount of Death. उसके बाद दिया गया है one of the largest Indus center. So which is the largest Indus place, which is the largest site of Indus Valley civilization? अगर इस तरीका से क्वेश्चन पूछे तो आंसर शुड बी मोहेंजोदारो। उसके बाद आता है ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, considered as the largest building of Indus Valley civilization, image of पशुपति और आदि शिवा, स्टैच्यू ऑफ अ bearded man, ये सब थिंग्स फाउंड किया गया था मोहेंजोदारो पे। नेक्स्ट इज चान्होदारो, इंदस रिवर, लोकेशन सिंध, पाकिस्तान, discovered or excavated by N.G. Mazda in 1930 to 31, later on further excavated by Ernest John Henry Mackay. Only in the city there was no cathedral excavated. So only एक ही इंडस प्लेस और सिटी है जहाँ पे यू विल नॉट बी एबल टू फाउंड एनी कैथेड्रल। कैथेड्रल के मीन से बड़ा बड़ा जो फोर्ट महल होते हैं वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। An evidence of lipstick and ink pot was found. These two are also important from exam point of view. Mehegar is next place, situated beside Kachi Plain near Bolan Pass, beside Polan River, Balochistan, Pakistan. Its present location. Discovered किया गया था और excavated किया गया था जेन फ्रैंकोस गैरेज एंड कैथरीन गैरेज ने in 1973 to 74. ये एक oldest civilization है of the Indian subcontinent. That means precursor of the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization flourish होने से पहले मेहगर सिविलाइजेशन स्टैब्लिश्ड हुए थे, यानी कि फ्लोराइज हुआ था। उसके बाद है सुतका गंडर। सुतका गंडर इज presently it is located in Balochistan, Pakistan, and it is beside Dasti River, and it is the westernmost site of Indus Valley civilization जो कि अभी पाकिस्तान में situated है। So 1927 में it was founded by Sir Aurelian. So what we got here is that this Harappa, Mohenjo-daro, Chanhu-daro, Mehegar, and Sutka-Gondar, these places of the Indus Valley civilization are situated in Pakistan. Now
whatever the places we are going to discuss, all those places are situated in India. So next is लोथल. लोथल जो है वो वोगावर और साबरमती रिवर के पास सिचुएटेड हुए थे. एंड लोकेशन प्रेजेंट इसका लोकेशन है गुजरात इंडिया. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एस आर राव ने इसको 1954 में डिस्कवर्ड किया था. ये एक पोर्ट सिटी था एंड वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओ दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीपल जो आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना के लोगों के साथ ट्रेड करते थे, वो लोग यहीं से करते थे. ट्रेड सेंटर था लोथल. एन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड एंड देन मॉडल ऑफ अ शिप. एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन, वहाँ पर राइस कल्टिवेशन भी किया जाता था. एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल, burying a male and a female in a single grave. So these are the important points of Lothal. You all have to memorize. Exam point of view से most important points are given over here. So अगर आप लोग चाहो तो इसको आपके कॉपी या नोटबुक में कॉपी कर. Next is Surkotada. Surkotada, Kutch region, Gujarat, India. This site was discovered by J.P. Joshi and provided first actual remain of horseborn. Important from exam point of view. Many times it has been asked, the remains of horseborn was discovered from which site of Indus Valley civilization? Answer should be Surkotada. And the location of Surkotada is Gujarat, India. Dholavira, Kutch region, Gujarat, India. Okay, its present location. And then this site was discovered by J.P. Joshi and R.S. Bist, Dholavira, in 1992-91. वहाँ पे क्या क्या मिला है? Figure of chariot tied to a pair of bullock and driven by a nude human. 1 point. Use of rocks for construction. That means धोलावीरा में रॉक्स, पत्थर यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन वर्क्स पे. Stadium was found and evidence of signboard inscription. So these particular points you have to memorize. Next is कालीबंगन, जो घग्गर रिवर के बगल में सिचुएटेड थे एंड प्रेजेंट इट इज़ लोकेटेड इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान. ये साइट डिस्कवर किया था बीबी लाल ने एंड वहाँ पे बोन्स ऑफ कैमल मिला था. सो इम्पोर्टेंट. प्लाउ फील्ड, ओल्डेस्ट प्लाउ फील्ड इंडिया, मस्ट इम्पोर्टेंट. यू हैव टू मेमोराइज ऑल दोज पॉइंट्स. आप लोग इसको कॉपी में लिखो तो अच्छा होगा. मंदा, जम्मू एंड कश्मीर, डिस्कवर किया था जेपी जोशी ने एंड ये नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न बाउंड्री मंदा. दाइमादाबाद, we have done it, southern boundary. It is beside Godavari basin. It was situated beside Godavari basin. ये महाराष्ट्र में प्लेजेंटली लोकेटेड है एंड इट इज़ द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड आलमगीरपुर, जो हिंडौन रिवर के बगल में सिचुएटेड थे उत्तर प्रदेश में, डिस्कवर्ड बाय वाई डी शर्मा इन 1958. ये ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के ईस्टर्न मोस्ट साइट में ये बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज टाउन प्लानिंग. टाउन कैसा था वहाँ का? Towns were divided into two parts. Town दो हिस्से में डिवाइड किया गया था. Upper part of cathedral possibly occupied by members of ruling class and lower part containing bricks house which were inhabited by common people. That means अपर टाउन में कैथेड्रल, बड़ा बड़ा फोर्ट्स, बड़ा बड़ा पैलेसेस, महल्स देखने को मिलता था एंड लोअर पार्ट पे ये सब देखने को नहीं मिलता था. वहाँ पे कॉमन पीपल बैठते थे. ग्रिड सिस्टम वॉज फॉलोड. Roads were cut at almost 90 degree or right angles and the city was divided into many blocks. और वो blocks कौन सा है? Rectangular and square in shapes. Underline that. In what blocks the city was divided? Rectangular and square in shapes. And then they used burnt bricks. That means उस टाइम में आज से 2500 years ago वहाँ के लोग bricks यूज़ करते थे जो प्रेजेंटली हम लोग यूज़ करते हैं. So they were that much of advanced. अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था वहाँ पे एंड इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ एवरी बिग एंड स्मॉल हाउसेज हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम. अपने अपने ही बाथरूम्स थे वहाँ पे, टॉयलेट्स अपना अपना थे. दैट मीन्स they have their own personal rooms also. Drains were covered with bricks and sometimes with stone slabs. जो नाली यानी कि ड्रेन्स जो होते हैं वो कवर किया जाता था ब्रिक्स से. एंड देन द स्ट्रीट ड्रेन वर इक्विप्ड विथ मेन होल्स. दैट मीन्स वो जो ड्रेन गटर होते हैं वो कभी कभी इट विल बी डर्टी, तो उसको साफ़ करने के लिए कहीं कहीं जगह में मैन होल्स यानी कि होल्स भी रखा जाते थे ताकि वहाँ से लोग मैन घुस के वो साफ कर सके. सो दिस इज़ अबाउट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट अ टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. So next point is political life. Okay, there is no clear idea about political organization of the Harappans, but if we take into account
The cultural homogeneity would have been possible to achieve without a central authority. Okay, वहाँ पे कोई political organization के बारे में clear idea नहीं दिया गया है. According to R.S. Sharma, merchants were the rulers. R.S. Sharma के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन में merchants ruler थे, and according to D.T. Kausambi, priests were the rulers. So this one is important. You just have to underline it, or you just have to write it down in your note copy. Many time questions was asked that according to R.S. Sharma, who were the rulers of Indus Valley civilization? Answer is merchants. So in this way question used to be asked. Next point is, it must be noted that Harappans were lacking in weapons. That means they do not have weapons. इसका मतलब ये होता है कि they do not like fighting, or they do not like killing people. इसलिए वहाँ पे weapons नहीं थे. Next point is agriculture. एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन. ये तो पता ही है, क्योंकि वहाँ पे बताया भी है कि कहाँ पे लोथल पे एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन भी मिला था. सो एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन. क्रॉप्स में दे यूज टू प्रोड्यूस वेट, बार्ली, डेट्स, पीज, सीसम, मस्टर्ड, मिलेट, रागी, बाजरा एंड जवार. सो ये these were the primary crops they used to produce. First to produce cotton in the world, most important. Who were the first, or which civilization was the first to produce cotton in the world? Answer should be Indus Valley civilization. So the people of Indus Valley civilization were first to produce cotton in the world. On the other side, sugarcane cultivation was unknown to them. Next point is trade. Okay, in trade, agriculture, industry and forest produce provided the basis for internal and external trade. That means within the country, or within the territory and outside the country, they used to do trade. And most important products which they used to trade were agriculture products, industrial products and forest products. Trade was based on barter system. Underline that word, barter system. उस टाइम में currency system नहीं थे. They used to do a trade on the basis of barter system. And what is this barter system? We will do it later. Harappans traded not only with other parts of India but also with many other countries of Asia like Egypt, Mesopotamia. We already done it. Next is religious practice. तो वो लोग कौन से gods को they used to worship. Mother goddess was a common feature of religion. Mother goddess, okay. Chief male deity Pasupati or Adishiva. So we have got the image of Pasupati or Adishiva, isn't it? And that was founded from which site of Indus Valley civilization? Mohenjo-daro. Okay, trees में they used to worship people, animals पे bull, birds पे dove and pigeon, and stones were worshipped. They used to worship these particular things. And weight and measures पे क्या है? There was very good system of weight and measures. Okay, they were made up of limestone, steatite, etc. in cubical shape. So this one is important. वो लोग जो instrument, जो जो थिंग्स यूज़ करते थे वेट एंड मेजर्स के लिए, वो किससे बना हुआ होता था? लाइमस्टोन एंड स्टीएटाइट से. ये दीज आर सम ऑफ द मिनरल्स. एंड उसका शेप कौन सा शेप में थे? वो क्यूबिकल शेप में होते थे. एंड दे वर इन मल्टीपल ऑफ 16. अंडरलाइन दैट. नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्क्रिप्ट. उन लोगों का वो दे यूज टू राइट डाउन. तो स्क्रिप्ट क्या था वो? द हरप्पन स्क्रिप्ट इज येट टू बी डिसअपीयर्ड. उसको अभी तक भी exactly we could not find it out what type of script was that. It is pictographic nature. दिखने में ये pictographic थे nature. अब ये pictographic क्या है? It was written from right to left in the first line and then left to right in the second line. पहले ये right से left के तरफ में लिखते थे, उसके बाद फिर फर्स्ट लाइन, ओके, इन द फर्स्ट लाइन, एंड देन फिर लेफ्ट से राइट की तरफ में लिखते थे सेकेंड लाइन में. सो टोटली डिफरेंट. इस स्टाइल को बुस्टोफेडन भी बताया जाता है. सो यू हैव टू अंडरलाइन दैट बुस्टोफेडन. फिश सिंबल इज मोस्ट रिप्रेजेंटेड वहाँ पे. एंड देन मोर देन 400 सिम्बल्स और लेटर्स आर यूज इन हरप्पन स्क्रिप्ट. हरप्पन स्क्रिप्ट में 400 से ज़्यादा सिम्बल्स एंड लेटर्स का यूज़ किया गया है. सम पॉइंट्स वहाँ पे मैंने पेंसिल से लिखा है. इंडस साइट फाउंड इन अफगानिस्तान. ओके, अफगानिस्तान में भी प्रेजेंटली इंडस साइट फाउंड किया गया. एंड उस साइट का नाम है सातुघाई एंड मुंदिका. नेक्स्ट इज हरप्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट प्रोड्यूस कॉटन वो किया है. लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहेंजोदारो वी हैव डन. एंड देन अगर लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछा जाए तो धोलावीरा. ओके, 2
अगर लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछा जाए तो आंसर विल बी मोहनजोदारो. एंड अगर लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन में आए तो आंसर विल बी धौलावीरा. ओके ओके, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स. ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है मैंने लिख के रखा था अपनी कॉपी में, और वही मैंने आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर दिया है. आई नो माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड, समझने में थोड़ा मुक्स प्रॉब्लम हो सकता है. सो मैं आई विल रीड इट आउट, आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है. Okay, one point is Indus Valley civilization was an urban civilization except Mehegar because it was non-urban or village-based or agriculture-based civilization. Okay, Indus Valley civilization urban civilization है, we all know that very well. But except Mehegar, Mehegar वो एक सिटी, वो एक साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कि नॉन अर्बन और विलेज बेस्ड सिविलाइजेशन थे. ओके, नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन वाज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स. वो तो हम लोगों ने किया हुआ ही है. अपर टाउन विथ कैथेड्रल फोर्ट बेस्ड ऑन ग्रीक आर्किटेक्चर. दैट मीन्स अपर टाउन जो है वो वहाँ पे फोर्ट्स देखने को मिलेगा एंड वो ग्रीक आर्किटेक्चर में बेस्ड है. अगर पैटर्न पूछा जाए कि किस तरीके से पीपल, दैट मीन्स हरप्पन पीपल यूज टू स्टे इन दैट अपर टाउन, तो पहले इलाइट क्लास बैठते थे, उसके बाद रूलिंग क्लास बैठते थे, उसके बाद ट्रेडर्स, उसके बाद प्रिस्ट. ओके, एंड देन देयर मेन प्रोफेशन वाज बिजनेस. नाउ लोअर टाउन जो है विदाउट कैथेड्रल, वो लोअर टाउन में कौन कौन बैठते थे? लोअर टाउन पे लोअर क्लास फार्मर्स, लेबर्स, वो लोग बैठते थे लोअर टाउन में. ओके, एंड उन लोगों का मेन प्रोफेशन था एग्रीकल्चर. यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करना होगा आप लोगों को, और वो है मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लिव्स इन लोअर टाउन. ये तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि लोअर टाउन में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स, ज़्यादा लेबर्स, लोअर क्लास के लोग ज़्यादा बैठते हैं, तो डेफिनेटली लोअर टाउन पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता था. नेक्स्ट इज धौलावीरा. धौलावीरा वॉज द ओनली साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिवाइडेड into 3 parts. Okay, all the other parts or all the other towns of Indus Valley civilization were divided into 2 parts, upper town and lower town, except Dholavira. Dholavira divided किया गया था 3 parts पे instead of 2, and lower town with cathedral. Okay, धोलावीरा का lower town पे भी you will be able to find out cathedral forts आप लोगों को दिखने को मिलेगा. इसीलिए धोलावीरा is little bit different from other sites of the Indus Valley civilization. Early Indus Valley civilization towns were divided into 6 big blocks, and वो कौन सा शेप्स पे होते थे? रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर इन शेप. नेक्स्ट इज देयर रेस्पेक्टेड एनिमल वाज हम्प्ड बुल. ओके, उन लोग का रेस्पेक्ट एनिमल हम्बुल थे. एंड मैक्सिमम डिपिक्टेड का मतलब मोर सीन एनिमल वाज यूनिकॉर्न, और वो एक इमेजिनरी हॉर्स है. आप लोग गूगल में एक बार फोटो सर्च कीजिए यूनिकॉर्न, यू विल बी एबल टू फाइंड व्हाट टाइप ऑफ हॉर्स इज दिस. तो ये उन लोगों का मैक्सिमम डिपिक्टेड एनिमल्स थे. रेस्पेक्टेड एनिमल हम्प्ड बुल, डिपिक्टेड एनिमल्स यूनिकॉर्न. Okay, next, Indus people did not use iron products as Indus Valley civilization belongs to Chalcolithic age. Okay, copper metals were discovered. आयरन के मेटल्स वहाँ पे डिस्कवर्ड ही नहीं किया गया था, क्योंकि आयरन इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था आर्यंस ने, और आर्यंस जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया था. इसीलिए इंडस पीपल डिड नॉट यूज़ आयरन प्रोडक्ट्स. आयरन पहले यूज़ किया था. उसके बाद फूड हैबिट्स में देयर वाज नो बाउंड्री. वो लोग वेज भी खाते थे, नॉन वेज भी खाते थे. ओके, देयर प्राइमरी स्टेपल फूड वेयर वेट एंड बार्ली. फर्स्ट प्लेस पे वेट, सेकेंड प्लेस में बार्ली, थर्ड प्लेस में राइस. ओके, राइस इज इन थर्ड प्लेस और थर्ड पोजिशन बिकॉज इट वॉज प्रोड्यूस इन लोथल ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड टाइम में राइस कल्टिवेशन करना शुरू किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसलिए राइस इज इन थर्ड पोजीशन. पहले से ही वो लोग वेट एंड बार्ली दे यूज टू हैव एज द प्राइमरी स्टेपल फूड. ओके, नोट, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड. आप लोगों को पता है. आर्यंस फर्स्ट कल्टिवेटेड शुगर केन इंडिया, ये भी पता हो गया. एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पोटैटो एंड टोबैकोज कल्टिवेशन. पोटैटो एंड टोमेटो का कल्टिवेशन, सॉरी टोमेटो ना, टोबैको का कल्टिवेशन इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था पोर्टुगीज़ ने. ओके, नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद फर्स्ट पहला डिस्कवर्ड लैंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो था रोपार, जो डिस्कवर्ड किया था 1953 में. एंड प्रेजेंटली इट इज़ सिचुएटेड इन कहाँ पे? इंडिया के
पंजाब एरिया में, नॉट इन पाकिस्तान बट इन इंडिया के पंजाब एरिया में इट इज़ सिचुएटेड. सो द क्वेश्चन विल बी which was the first discovered site of Indus Valley civilization after independence of India. तो आंसर आपका रोपार होगा. सो इसके बाद सम क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक से अपने आप लिख के रखा है. सो यू डोंट हैव टू डू दिस, यू जस्ट रीड द क्वेश्चंस. इससे क्या होगा कि आपका ये पूरे का पूरे चैप्टर्स जो अभी हम लोगों ने किया था वो कवर अप हो जाएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Who was the first person to give the earliest reference of the civilization? Charles Mason. Who named the civilization as Indus Valley Civilization and in which year? Sir John Marshall, and the year was 1924. Write down the names of the boundary of Indus Valley Civilization. The names of the boundary of Indus Valley Civilization were Sutkagandar on the Makran coast represent western boundary, Alamgirpur in Uttar Pradesh represent eastern boundary, Manda in Jammu and Kashmir represent northern extreme or northern boundary, and Daimabad in Maharashtra represents southern boundary. According to anthropological survey, how many types of Indus population were there? Name them. According to anthropological survey, there were 4 types of population: Proto-Australoid, Mongoloid, Mediterranean, and Alpine. Who discovered Harappan seal and in which year? Write down the name of the animals that surrounded the seal. Harappan seal was discovered by J. Fleet in the year 1912. The name of the animals that surrounded the seal were rhino, elephant, bison, humped bull, tiger, buffalo, and deer. Beside which river Harappan civilization was situated, and write down its present location. Harappan civilization was situated beside Ravi River, and its present location is Montgomery, Sahiwal district, Western Punjab, Pakistan. Which was the second discovered site of Indus Valley civilization? Who discovered it and in which year? The second discovered site of Indus Valley civilization was Mohenjo-daro. It was discovered by Rakhaldas Banerjee and the year was 1922. Earliest evidence of bones of horse and camels were discovered from which site of Indus Valley civilization? Earliest evidence of bones of horse were discovered from Surkotada, Kutch region, Gujarat, India, and the earliest evidence of bone of camel were discovered from Kalibangan, Ghargar, Ganganagar district, Rajasthan. Which was the only port city of Indus Valley civilization? Write down short notes about the city. As we all know very well that the only port city of Indus Valley civilization was Lothal, and Lothal was situated beside Godavari river Sabarmati, and presently it is located in Gujarat, India. It was discovered by S.R. Rao in 1954,
and it was the important trade center of Indus Valley civilization. Evidence of rice cultivation and evidence of double burial, that means burying a male and a female in a single grave, were discovered in Lothal, and the evidence of artificial dockyard and the model of ship was also discovered in Lothal. Lothal in the city that has houses with doors on the main street. Now, last question. Write down short note about town planning, trade system and religious practices of Indus Valley civilization. वो जो चैप्टर्स हम लोगों ने आगे में किया था वहाँ पे ये टाउन प्लानिंग, ट्रेड सिस्टम एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल्स में अभी हम लोगों ने किया है। तो आप लोग एक बार उस पॉइंट में रिटर्न बैक जाके उसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद यू विल गेट द आइडिया। उसके बाद आप लोग इसको चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग बस उसको रीडिंग करके यू कैन मेमोराइज इट। इट्स वेरी सिंपल, उतना हार्ड नहीं है, तो आप लोग ये कर सकोगे। सो ये करने के बाद टुडे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। इसका मैंने एक और वीडियो बनाया है जहाँ पे सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एमसीक्यूज़ मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को टाइम मिला तो आप लोगों को भी एक बार देख लीजिएगा, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा वहाँ से भी। So this much for today. We have completed the whole first chapter of ancient Indian history, Indus Valley civilization. So next day we will start next chapter of ancient Indian history, and that will be Vedic civilization.